பிரதமர் மோடி மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் புதின் டெல்லியில் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகின்றனர். அதன் காட்சிகளை நேரலையில் பார்க்கலாம். आर्कटिक से लेकर फार ईस्ट तक और सागर से लेकर के अंतरिक्ष तक भारत और रूस के संबंधों का और भी विशाल विस्तार होगा। यह विस्तार हमारे सहयोग को अतीत के कुछ गिने चुने दायरों के उस पार ले जाएगा। साथ ही हमारे संबंधों के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ और मजबूत होंगे। भारत की विकास यात्रा में रूस हमेशा हमारे साथ रहा है। हमारा अंतरिक्ष में अगला लक्ष्य भारत के गगनयान में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजना है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस मिशन में रूस के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। युवाओं में हमारे देशों के भविष्य का कायाकल्प करने की क्षमता है। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत एवं रूस की प्रतिभा संपन्न बच्चे सम्मिलित रूप से अपने इनोवेटिव आइडियाज का प्रदर्शन आज दोपहर के बाद करेंगे। ये आइडियाज उन्होंने मिलजुल कर विकसित किए हैं। हम भारत के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में और बिजनेस के व्यापक अवसरों में रूस की भागीदारी का स्वागत करते हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि अब से कुछ समय बाद हम इंडिया रूसिया बिजनेस समिट में भी भाग लेंगे। इसमें दोनों देशों से करीब 200 प्रमुख आर्थिक उद्यमी भाग ले रहे हैं। भारत एवं रूस पारंपरिक हित के सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में घनिष्ठता से सहयोग करते रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन तथा मैंने इन पर भी विस्तार से चर्चा की है। भारत और रूस तेजी से बदलते हुए विश्व में मल्टीपोलैरिटी और मल्टीलेटरलिज्म को सुदृढ़ करने पर एकमत है। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, अफगानिस्तान तथा इंडो पैसिफिक के घटनाक्रम, जलवायु परिवर्तन, एससीओ, ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय संगठनों एवं G20 तथा आसियान जैसे बहुपक्षीय संगठनों में सहयोग करने में हमारे दोनों देशों के साझा हित रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अपने लाभप्रद सहयोग और समन्वय को जारी रखने पर सहमत हुए हैं। मैं प्रेसिडेंट पुतिन द्वारा रूस के सुदूर पूर्व के विकास के लिए उठाए गए कदमों से बहुत प्रभावित हुआ हूं। भारत इस क्षेत्र में सहयोग के लिए तत्पर है। आज लिए गए निर्णयों से हमारे सहयोग में और वृद्धि होगी तथा चुनौतियों भरे विश्व में शांति और स्थिरता की बहाली में योगदान मिलेगा। भाई और बहनों, भारत और रूस के संबंधों की शक्ति का स्रोत सामान्य जन में एक दूसरे के प्रति सद्भाव और मैत्री है। हमने आज ऐसे कई प्रयासों पर विचार किया है जिनसे पीपल टू पीपल संबंध और मजबूत हो और दोनों देशों के लोगों की, विशेषतः युवाओं की एक दूसरे के बारे में जानकारी और आपसी समझ और बढ़े। इससे भारत रूस के संबंधों के भविष्य की एक नई नींव का निर्माण होगा। फ्रेंड्स, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि भारत रूस ये मैत्री अपने आप में अनूठी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विशिष्ट रिश्ते के लिए प्रेसिडेंट पुतिन की प्रतिबद्धता से इन संबंधों को और भी ऊर्जा मिलेगी और हमारे बीच प्रगाढ़ विश्वास एवं मैत्री और सुदृढ़ होगी और हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदियां प्राप्त होगी। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्पासिबा। Thank you, sir. Now it is my pleasure to invite the President of the Russian Federation, His Excellency Mr. Vladimir Putin,
to deliver his statement to the media. Dear friend, Your Excellency Mr. Prime Minister, ladies and gentlemen, it is always our great pleasure to come to India because we know that here we will find an environment of sincere friendship, business-like communication and cooperation. Our nations and states have for a long time been connected through a strong relationship of friendship, mutual respect and sympathy. Yesterday, during the working dinner with Prime Minister Modi, and I'm, by the way, very grateful to you for this sign of friendship, for giving us this opportunity to talk in this very close format and to discuss the most important and relevant topics on the agenda, on the global agenda, and discuss the fundamental issues of Russian-Indian cooperation and to outline new horizons. And today, first in the restricted format and then with participation of delegations, we discussed the key areas of our cooperation. We've had a very meaningful discussion on the whole range of issues of bilateral cooperation. We have discussed in detail relevant topics of international and regional agenda. We have adopted a joint statement which reflects almost all aspects of Russian-Indian cooperation. We have outlined large-scale plans for a long-term prospect. A solid package of interagency and corporate documents we have just signed today have been prepared for the visit, and its goal is to further develop and deepen our bilateral ties in various areas. It is true that we indeed discussed during these negotiations our trade and investment cooperation, and broadening this kind of cooperation is of utmost importance for me and for Mr. Prime Minister. We have set a goal of increasing the goods turnover up to $30 billion by 2025 and the amount of mutual investments up to $15 billion. And in this context, we were pleased to note that last year mutual trade grew by 21%, exceeding $9 billion. And over the 7 months of this year, it has added another 20%. If we proceed moving at this pace, we will be able to reach our goal even before the set framework. Business circles of Russia and India maintain close contacts. They implement large joint investment projects. Representative Indian delegations took part in St. Petersburg Economic Forum and in the Eastern Economic Forum in Vladivostok. And it is my great pleasure to once again invite Mr. Prime Minister to participate in the next Vladivostok Forum as the main guest at the Vladivostok Economic Forum in September 2019. Russian-Indian Business Forum is taking place in New Delhi these days, and Mr. Prime Minister and I will deliver a statement to its participants, and we will support useful initiatives to develop cooperation in key areas of economy and finance. Deepening our cooperation in energy sector is one of the topics that we have paid a lot of attention to together with Mr. Prime Minister. We gave a positive assessment of implementation of interagency program of cooperation in the strategic area. Russia is a reliable supplier of hydrocarbons to India. We are successfully implementing long-term contracts through Rosneft and Gazprom to ensure to supply the Indian economy with energy commodities. India imports Russia's liquefied natural gas. We're supplying this gas from Sakhalin, one field in which Indian partners own 20%. In June, the first batch of LNG was sent to the Indian market within the framework of the contract between Gazprom and Gas Authority of India Limited. We also welcome interest of energy companies from India to expand their businesses in Russia. We're ready to consider the possibility of cooperating within such programs as Far Eastern LNG, Arctic, LNG2, and also other projects to explore natural resources of Siberia, Yamal, and continental shelf of the Russian Federation. We have discussed in detail the flagship project in the peaceful use of nuclear energy, Kudankulam nuclear power plant. The first 2 units of this nuclear power plant are gaining their full capacity
capacity. The 3rd and 4th units are being constructed. The 5th and 6th units are to be constructed next. According to the agreements that we possess, based on Russian high-tech technologies, we plan to build 12 power units in the next 20 years in India. We have touched upon strengthening our cooperation in industry and investment. We talked in particular about machine building, metallurgy, agriculture, medicine, pharmaceuticals, and biochemical technologies. We believe there is a good prospect for our joint cooperation in large infrastructure projects. In particular, Russian Railways company is ready to participate in the projects to build modern railroads in India. We have agreed that Russia will assist Indian partners in exploring outer space. Roscosmos Agency plans to participate in preparing Indian national program to launch the manned spacecraft. And of course we have discussed in detail the prospects of our military and technical cooperation. For decades, Russia and India have been cooperating successfully in this area. We enjoy a truly close and mutually beneficial relationship, which is an inalienable part of the Russian-Indian strategic partnership. Our cooperation goes beyond supplies of Russian weapons. Our countries produce and develop jointly modern military products. We maintain regular contacts between ministries of defense and general staff of our countries. We improve our combat readiness. In August, Indian units participated for the first time in anti-terror exercises called Peace Mission 2018 that took place in Russia. India's servicemen are active participants of Army International Games in tank biathlon and in competitions of Alpine Special Forces. We have, of course, paid a lot of our attention during our talks to humanitarian component of our relationship. Russia and India have always demonstrated interest in each other's culture and spiritual legacy. This is confirmed by the huge success of the Festival of India in Russia, which will last until March 2019 in 22 cities of Russia. India will host Festival of Russian Culture. I'm convinced all these events will bring the peoples of our countries even closer. There are almost 10,000 Indian students in Russia and about 100 scholarships are provided to the citizens of India annually. India is a popular direction for Russian tourists. In 2017, about 220,000 Russians visited India. We received 94,000 Indians in Russia. When discussing international agenda, we have confirmed that Russia and India adhere to similar or concurrent positions on the key global issues. Bearing this in mind, we have agreed to step up our coordination and cooperation at multilateral platforms such as the UN, BRICS, SCO, and G20. We will also cooperate closely to strengthen இந்தியா ரஷ்யா இடையேயான வருடாந்திர மாநாடு டெல்லியில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ரஷ்யாவிடமிருந்து 40,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் S-400 வகை ஏவுகணை தடுப்பு அமைப்புகளை வாங்குவதற்கு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து இருநாட்டு ரஷ்ய அதிபரும் இந்திய பிரதமர் மோடியும் செய்தியாளர்களை கூட்டாக சந்தித்ததை நேரலையில் பார்த்தோம். தொடர்ந்து இனிவரும் செய்திகளை பார்க்கலாம்.